खुदा के अजीम खादम रॉड फेरल फ्रॉम यूएसए हमारे साथ कनेक्टेड हो सकें ताकि अंजील की मुनादी कर सकें और गॉस्पल की प्रीचिंग कर सकें पाकिस्तान में। और ये खुदा का बेहद बड़ा फजल है पाकिस्तान के लोगों के लिए कि वो खुदा के अजीम खादम हमें खुदा के पाक कलाम में से सिखाते हैं और अपना कीमती वक्त, अपना प्रीशियस टाइम हमें देते हैं ताकि हम अंजील की बातों को अपनी ज़िंदगियों में ले सकें और अपनी ज़िंदगियों को सुधार सकें। हालेलुया। Yes, dear brother. Welcome back in other video and God bless you so much and may Holy Spirit be with you during sharing the message and please. Yes, sir. In the name of Jesus, I greet you this morning in the name of the Lord, and I greet your congregation. And let's maintain the worship. Amen. In the name of Jesus. Amen. Prayer, my good brother. Yes, please pray and then we literally worship. Then we sing a literally worship song and then we start our Bible. This morning is your Holy Spirit. Ask Him to bless this time that we spend together in your word. Bless our hearts. Help the Holy Spirit to guide our tongue, guide our hearts. Let the words that we go over, the words that we share, resonate in our spirits. Make a change in our lives. Because you said, Lord, that your word is food. Your word is love. Your word never changes, Lord. And so we're going to receive it, let it nourish our soul and our hearts this morning, this day, for our lives. These are the blessings we ask in your holy name. Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Yes. Now we sing a worship song. Oh Lord, you are my Lord, and I will ever praise you. Oh God, you are my God, and I will ever praise you. I will seek you in the morning, and I will learn to walk in your ways, and step by step you lead me, and I will follow you all of my days, and I will follow you all of my days, and I will follow you all of my days. Amen. Praise the Lord. Yes, my brother, what topic God given to you today for sharing with in Pakistani peoples? Yes, sir. This morning we're going to begin John, the 3rd chapter, and the 16th verse. John I want to talk about foundation. जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 खुदा के पाक कलाम में से आज हम सीखेंगे. इट इज़ वेरी फेमस वर्स दैट गॉड गिवन टू योर ब्रदर फॉर शेयरिंग इन पाक कलाम में से हम सीखेंगे. यूहन्ना की इंजील 3 बाब और उसकी 16वीं आयत को हम पढ़ेंगे. क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए. आमेन. It starts off, it says, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. For God sent his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. और खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए. और खुदा ने अपना बेटा दुनिया में भेजा ताकि दुनिया जो है, दुनिया के लोग जो है, जो कोई उस पर ईमान लाए कोई भी उनमें से हलाक ना हो, कोई भी उनमें से मरे ना बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए. हालेलुया. He that believeth on him is not condemned, but he that believeth
not is condemned already, because he has not believed in the name of the begotten Son of God. Amen. And this is that is light is come into the world, and men loved darkness rather than light, because their deeds were evil. Amen. और जितनों ने उस पर ईमान रखा, उस पर ईमान लेकर आए, उन पर सज़ा का हुक्म ना होगा, लेकिन जो उस पर ईमान ना लेकर आएगा उस पर सज़ा का हुक्म होगा। और खुदा का पाक कलाम ये कहता है कि नूर जो था वो दुनिया में आया और लोगों ने नूर की बजाय तीखी को ज़्यादा पसंद किया और तारीकी में ज़िंदगी गुजारना ज़्यादा उन्होंने पसंद किया। 10th verse. And but what saith, the word is nigh thee, even in thy mouth and in thy heart. That is the word of faith which we preach, that if you shall not confess with thy mouth the Lord Jesus, and shall believe in thine heart that God has raised him from the dead, thou shalt be saved. So, brother, what the text is this morning? Oh, go ahead, I'm sorry. Amen. Can I read it in Urdu language? Yes. Amen. रोमियो 10वां बाब और उसकी 8वीं और 9वीं आयत को हम पढ़ेंगे कि अगर तू अपनी ज़ुबान से यस्सु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया तो तू नजात पाएगा। आमेन। What the text of those two scriptures are mostly saying, beloved, is that if you believe in your heart, first you have to confess, repent of your sins, and believe that Jesus Christ is Lord, and ask him to come into your heart. Confess that Jesus is the Lord, and make you a new creature in Christ. Then you're saved. Amen. Then you're saved. We Amen. believe that in the scripture. Just repent. Amen. Praise the Lord. और खुदा का पाक कलाम हमें कहता है कि अगर हम अपनी ज़ुबान के साथ मसीह यस्सु के खुदावंद होने का इकरार करेंगे और शक ना करेंगे और इस बात पर भी ईमान रखेंगे कि खुदावंद ने उसे मुर्दों में से ज़िंदा किया और खुदावंद ने उसे मुर्दों में से ज़िंदा किया और अपने दिल और जान से इस बात पर ईमान रखेंगे कि वही नजात दहिंदा है और वही पूरी दुनिया को नजात देने वाला खुदा और वापस दुनिया में आएगा, तो तब हम नजात याफ्ता होंगे, यानी सेफ होंगे और हम पर सज़ा का हुक्म ना होगा। हालेलुया। But that's good news. That should make us all happy. Because we know that no matter what you did in the past, all you have to do today at this moment is that Jesus Christ to come into your heart. Amen. और ये yes, praise the Lord. Amen. और ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, खुशखबरी है कि अगर हम खुदावंद यीशु मसीह आपका पास्ट यानी जो गुजर चुका है उसे नहीं देखेगा, बल्कि आपकी अब की ज़िंदगी को देखेगा कि अब आप कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तौबा के बाद उसे कबूल करने के बाद कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और खुदावंद यीशु मसीह आपकी इस बात पर कि आप अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपका तल्लुक़ खुदा के साथ है, तो आपको आपके गुनाहों से आज़ाद करेगा, छुटकारा देगा और आपको हमेशा की ज़िंदगी देगा। और खुदावंद यीशु मसीह हमेशा आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। आमीन। It makes me happy, and I know it makes you happy as well, dear heart, that the great God that created the heavens, the earth, and everything cares enough about you and I. Amen. That he Praise sent the down Lord. his only Son to save us. अगर आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में भेज दीजिएगा, हम उसके लिए आपके लिए ज़रूर दुआ करेंगे। यस डियर ब्रदर, प्लीज़ प्रे।